However, notwithstanding the violation of Section 31, my due tax has been paid at the rates which are not denied in the show cause notice. Then GST find that is not mentioned, and the is on the basis on the determination of tax liability, like you have short paid. Then also the amount of the short paid should be mentioned on the show cause notice on which we'll file an appeal. उसमें लिखा है कि should be quantified. Yes. लिखा है. Yes. Supposing it's not written, Okay. I don't think that becomes very fatal. वो कोर्ट की जजमेंट्स हैं. उसने लिखा है you are short paid. आप कहते हैं मेरा 10 रुपए शॉर्ट पेड था, उसने 10 रुपए नहीं लिखा. Right. भारतीय एयरटेल में यही इन्होंने बकवास लिखी थी. ये आपको पता था, आपको नहीं पता क्या शॉर्ट पेड है. बट वंस इज ए शॉर्ट पेड, इफ यू वांट टू क्वेश्चन इट देयर एंड देन. शो कॉज नोटिस के हर पॉइंट का आपको रिप्लाई देना है, चाहे 50 पेज लिखने पड़े आपको. डोंट गो के सब्सटेंटिव शो कॉज नोट. नो, there are 20 points, there is 20 points. So then this, I filed an affidavit that I have no right to concede or defraud anyone by issuing these tax invoices. These are issued normal constant basis. For proper sales, we don't know. But that's the way. It's a technical defect. It's technical defect. But the fact is, it is a part of substantive law. But Supreme Court rulings are there. Inflation becomes sacrosanct. Courts cannot delay if there is a power. But if the proper officer has not mentioned even the tax period in the notice itself, does that not make it inflexible? वो छोटी सी पॉइंट है, वो छोटा, वो तो गोज ना, नोटिस पीरियड की मेंशन की जरूरत नहीं है ना. But where he says you have short paid tax in a particular period, there he has to mention the period. Not generally. Yes. Second, a person paying tax under section has not furnished returns for 3 consecutive tax periods. जल्दी से आपको रिलीफ नहीं देने वाले. Registration has been obtained by means of fraud, willful misstatement, or suppression of facts. So in my checklist, I told you, you have to see whether you need to file an appeal. Stop it. Nobody will accept your appeal. You will not be allowed to build any. So you have to take a call with the client when it comes to filing. You will file the appeal. Now, amount pay, और का cancel हो गया. And you come to know. He doesn't tell you, don't tell what happens. You'll be thrown out of the court. Because once his RC is cancelled retrospectively, 4 साल पहले से कैंसिल कर दिया, एक्ट में पावर है. पावर को चैलेंज करो एक अलग बात है. We are discussing first appeal only, not the high court rates. My view is, and Bhatti Sahab can also confirm, any person aggrieved with any order or decision, any order passed in Mr. Bhatia's case that impacts me, I can also challenge that order. Am I right, sir? But then say that indirectly you should also be served any kind of an intimation. No. But how will you No. get to know? Oh, I will come to know. He will tell me no. Maybe your portal will also tell you. Yes. I don't know. जी जब आपका आईटीसी डिसेबल हो गया, आपको रेड फ्लैग आ जाएगा आपकी रिटर्न के लिए 10 करोड़ का पार्टिया. Suppose you don't do anything, what will court do? You have not contested this issue. Your ITC, you pay. I'm not saying it's impossible. You also have Arise India, where tax is not paid, you shall get relief. But that was dealing with tax not paid, not with cancellation of RC retrospectively. But you have Shanti Kiran, you have Shrestha Trading Supreme Court. वो सारी चीज आपके पास हैं. But GST scheme like Bharti Airtel said is different. भारतीय एयरटेल में बहुत बड़ा प्रॉब्लम खड़ा किया. उन्होंने बोला कि जीएसटी की स्कीम बिल्कुल अलग है. ये आपकी बाकी सब जजमेंट आप कोट करते हो. These are flimsy grounds. अपील वहां फाइल करनी पड़ेगी सर. यहाँ नहीं हो सकती, यहाँ रिट भी नहीं हो सकती, कुछ भी नहीं हो सकता. अभी फैसला के केस में परसों मैंने अपने ग्रुप में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट डाली थी. अभी किसी को पता नहीं उस जजमेंट का, मेरे पास ऑनलाइन है. उन्होंने बोला फैसला का जुरिडिक्शन वही है जो आपका ओरिजिनल जुरिडिक्शन था, वही आपकी अपीलें फाइल होंगी. उन्होंने ये झगड़ा खत्म कर दिया. by GST में चल रहा है. So wherever you are confronted that your RC was cancelled by me, you have committed a fraud or something like this in subclause E of subsection 2, then you have a very difficult case whether you want to pursue or not. Right? Because these are your documents filed.
visual certificate of registration. And it's a normal saying in law, document don't tell lie. You cannot say document नहीं दिया नहीं थे. In the case of the cancellation of the RC, main supplier should be also party if we don't file the appeal. नहीं उसका पार्टी में क्या करोगे? उसका तो आरसी कैंसिल हो गया, उसका टाइम बार सब कुछ हो गया, आप क्या करोगे उसका? Affected by that order and filing the appeal. Yes, yes, you can make him a pro forma party. Yes, let the court decide उसको बनाना है नहीं बनाना. आप तो बना के रखो, एप्लीकेशन डालो उसमें. So like what is happening in the fake billing equations? People, बंदा arrest हुआ हुआ जो main kingpin है, अगर what the department is claiming, and now the further in the investigation, the order is served to you, a notice is served to you that you have also supplied to that material. Supposing, let me tell you something. Supposing in paper comes, newspaper reports come from CGST Gurgaon, कि Mr. Sushil Verma was the kingpin of the bogus suppliers. Should I not contest? I must. There's a recent liability confirmed by Bombay High Court. One event manager was posting on Facebooks. मैंने इतने इवेंट किए, ये किया, वो किया. किसी अफसर ने वो सारा फेसबुक अकाउंट रखकर, मैंने सर्कुलेट किया था आपके लिए, उसने टैक्स लगा दिया. जी क्या कहा, कहते हैं ये तुम्हारे अपने स्टेटमेंट से is justified. So wherever you think your client is suffering because of action of somebody else, examine this whether you should contest this. It's for you as professional to decide what you should advise. And this is what litigation is about. Litigation is not there कि मेरा IT से reject हो गया, मेरा RC cancel हो गया. This is not litigation. This is a normal litigation. So in all cases, notice should be issued to the party. But if I'm not directly affected with that order, so How will it not be directly affected? आपका IT से सारा deny हो जाएगा? but department ने हमको तो notice serve नहीं किया. करेंगे 73-74 में ना? What is 73? If you have availed a wrong input tax credit or refund has been erroneously given to you, सारे यही तो ग्राउंड और क्या, क्यों ऐसे इतने बड़े बड़े ग्राउंड क्यों लिखे उन्होंने? इनपुट टैक्स आईटीसी वर्ड मींस एंटायर एक्ट. पर अगर अमाउंट क्वांटम है वो इतना छोटा है और मतलब You take a call, again you take a call whether appeal has been filed or not. ये इनकम में थोड़ा 50,000 नीचे के आप अपील फाइल नहीं करेंगे. डिपार्टमेंट अपने लेवल पे नोटिस इशू नहीं करता है उस चीज में तो कर रहा है 26,000 रुपीस के लिए भी आपने अगर आपने अंदर में आने के बंदे को अरेस्ट किया हुआ है, उसके लिए भी वो सबको भेज रहा है. We are dealing with those. See, the more they go, more they get computerized, more information will come. Technology is available. In America, they do forensic audit. वो आपको कभी नहीं बुलाते वहां. I'm a part of that particular team in America. Sir, forensic audit is where if you have in India, they match your all invoices, computer. क्या वो item matches? And law firms have team of forensic audit running into 40-50 people, lawyers, chartered accountants. And along with the artificial intelligence. Yes. हमारे यहाँ भी टेक्नोलॉजी धीरे धीरे आ रही है. आज बहुत सारी आ गई है, पर अभी इस टेक्नोलॉजी आने में इट्स वेरी एक्सपेंसिव. इनफैक्ट दैट टीम मेट हमारे दिल्ली कमिश्नर राजेश प्रसाद जी met Rashtra Commission. So this is the way you prepare your paper book when you appear before an authority under the department. That is your paper book. जब आप लेके जाएं, your body language, your eye contact, your dress, your language, your composure should be perfect. बाहर बैठ के कोई गॉसिप आपको नहीं करनी लोगों से कि साला पैसे लेते हैं, वे चोरी करते हैं. No, it's not your job. Never gossip when you go for a case. Just sit there. I always see Mr. Bhatti, he doesn't even talk to us in tribunal. He's come for a job. He's not come to gossip with us. No, gossip lunch room है ना, जो मर्जी करेंगे. वहां जाके आपको कुछ नहीं करना. There's a recent case I had gone to DRA in Noida. एक लॉयर बैठा था, KPMG का कोई एसोसिएट था. वो बोल रहा था चोर बोल रहे हैं. वो जो ऊपर ज्वाइंट डायरेक्टर बहुत सुन लिया, उसने बुला लिया उसको. They कहते get out from this house, from this office. So when you go to do a case, it should be your file and your case, full stop. अंदर जाके ये नहीं बोलता नहीं पैसे नहीं दे तो केस कर दिया, ये चोरी है. Not your job. Don't get into this. Many people write ground of appeal. This case is illegal because I didn't give him money. But that is too much. Be aggressive on your issues, right? And your dress code should be proper. लाल रंग की जीन और पीले रंग की कमीज में चले गए आप,
आप शक्ल से प्रोफेशनल नहीं लगोगे, राइट? Sir, last week, just to add in, as we were doing input, sir, last week there was, I don't want to name the justice as well as a lawyer. I think that would be against the ethics. So last week there was a lawyer in Patna High Court who was arguing with the Lordship, and he said, Lordship told him something to observe, and he said, yeah. So he said, you please don't use this word, yeah. He said, I never used it, yeah. I use yes only. So maybe the Lordship got confused. I've not heard him really well. So he started doing the hearing. After 5 minutes, again he said, yeah. He said, now again you have been talking, yeah. He said, sir, Lordship, I'm very sorry. I never use yeah. How can I use this kind of a foul language? I always use yes. But still, if you are saying so, maybe due to slip of tongue, I would have been using it, right? But I'm not able to, consciously know about it. But I will improvise on my. Judge have you biased हो क्या सब, he still is in the chair of, is an institution in himself. You have to show respect. There have been many instances Sir, of bias. Yeah. Now learning out of this Many video, high court youngsters जो है बहुत ज़्यादा use करते हैं. this was a learning video wherein two things I do with Lordship. I am not the first time coming to the state high court. I have been doing my hearings in Delhi High Court, in Supreme Court, everywhere. I never use this. So the two messages what the person who shared the video was: firstly, if you feel you have done some mistake, accept it. Like he accepted that due to slip of tongue, maybe I'm not able to consciously understand what I'm using, but I will improvise. Secondly, he was confident to still go on with the proceedings. But again, third negative was that while judge was giving him any kind of a cautious thing, he was telling his credentials. He already knows this. He's not bothered about. He's also a lot. He's a judge. He's a justice of a court. Does not matter. It's a Supreme Court or a High Court. Judge is a judge wherever he is. So don't say because I'm arguing in a higher court, so that will higher your credibility in front of a justice. That is a very wrong thing. Dropping names should not be a part of your life also. I know Mr. Bhatia very well. He may not even recognize me. I know him. That judge, he's been coming to my house. This is a very cheap thing to drop names in your conversation with friends or your client. Your client knows your worth. Your client definitely knows who the hell are you. वो आपको तभी आता है, आपकी इंक्वायरी करके आता है. आपको पता है आप चोरों का वकील हो या अच्छे वकील हो, उसको सब पता है. Don't presume it doesn't know you. कई लोग देखो बड़ी बड़ी फोटो लगाते हैं होम मिनिस्टर के साथ, लॉ मिनिस्टर के साथ. आई डोंट नो फॉर व्हाट. मतलब व्हाट आर यू ट्राइंग टू शो? अब मोदी के साथ किसी टेररिस्ट ने फोटो लगा ली, वो तो जेल में है, तो इट डजंट मीन कि मोदी वाज हिज फ्रेंड. ओके, सो योर पेपर बुक शुड बी प्रॉपर. आपका असेसमेंट ऑर्डर, शोकाज नोटिस, जो भी आपने अपील में लिखा है, दे शुड बी प्रॉपर्ली फ्लैग्ड सो दैट यू डोंट पैनिक इन फ्रंट ऑफ द अथॉरिटीज. केस लॉ दो तरह के होते हैं. एक तो होते हैं जनरल, लाइक नेचुरल जस्टिस, नोटिस इश्यूज, एटसेट्रा एटसेट्रा. द अदर आर टेक्निकल, एस्टेट्स एंड इंटरप्रिटेशन, टैक्स रेट क्लासिफिकेशन, एडवांस रूलिंग्स. You have to know what case laws are binding on the authority. That is only a Delhi High Court judgment or a Supreme Court judgment. No other judgment is binding on the authority in Delhi. They have a persuasive value. They must accept. If they don't accept, we can't do anything. Right? So जो चीजें बाइंडिंग है वो आपको पहले आर्गू करनी. सपोजिंग उस अथॉरिटी का अपना डिसीजन है, कोई स्पेशल कमिश्नर है, जब जो भी है, आप पहले उठ वो कोर्ट करो कि सर आपने पहले इस केस में ऐसा कर रखा है. तो बाय व्हेन यू कोट हिज ओन डिसीजन अंडर सिमिलर सर्कमस्टेंसेस, देन यू आर बेसिकली टेलिंग शट अप, नाउ यू कांट आर्ग्यू आस्क अस एनीथिंग एल्स. यू प्रीएम्प्ट हिज फर्दर क्वेश्चनिंग, राइट? देन यू हैव एनी सुप्रीम कोर्ट, देन सुप्रीम कोर्ट, देन ज्यूरिसडिक्शन हाई कोर्ट. जो जजमेंट ये बाइंडिंग है उनकी कॉपीज आपके पास होनी चाहिए. पहले दो या उनको बोलो आप लेके जाओ, कॉपी दे दो, उसको अंडरलाइन कर दो, दिस व्हाट वी हैव रेड टू यू. और आपकी ड्यूटी है, वी हैव लर्नड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर ट्रिब्यूनल इन दिल्ली, कि आपकी ऑर्डर शीट पे लिखी होनी चाहिए कि आपने क्या वहां कोट किया था. ही हैज टू राइट, दिस इज जॉब, ही हैज टू राइट ऑल द फैक्ट्स. और जैसे आप हियरिंग खत्म करते हैं, ऑर्डर शीट की कॉपी रख लीजिए, सर्टिफाइड कॉपी ले लो. 5 साल के बाद नहीं मिलेगा आपको कुछ भी. आई हैव लर्नड हार्ड वे कि व्हेन वी गो टू दिस ट्रिब्यूनल, आपने वहां ऑब्जेक्शन फाइल में क्या लिखा था बताओ. मैं दिस इज सच ए रिडिकुलस क्वेश्चन.
You are against an appellate order. Your question is very limited to the question raised in appellate order. आपने वहां point लिया या नहीं लिया था? Because he doesn't know कि he can step into the shoes of assessing authority also. There is the bar. But it's a lesson learned कि जो भी आप वहां sign करने immediately next day take certified copy and keep in the file. And your file should be immaculately maintained. You are not, the client is not wedded to you. Client can go to somebody else tomorrow for ABC reason. You should be able to hand over a correct file to the client. कि साला जा रहे नहीं किसी के फाइल पेज फाड़ के दे दो, कुछ लोग करते हैं हमारे बारे में, फाइलें फाड़ मिल नहीं रही, पता नहीं कहाँ है. And then you are not a professional. You should be doing some other job, not professional. तो जितना आपने काम किया उसका आपको पैसे मिले ना, उसकी पूरी फाइल बना के दीजिए. ऑर्डर शीट की कॉपी हो या कुछ इंटरिम ऑर्डर पास हो, कोई आपके स्टे कंप्लायंस चालान हो, वो सारे उस फाइल में होने चाहिए आपके, ताकि कल को कभी भी आपको जरूरत पड़े. अब 73 का नोटिस 3 साल के बाद आ सकता है, 74 का 5 साल के बाद आ सकता है. 5 साल का मतलब 6.5 साल है फ्रॉम डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न. तो अगर वो 6 साल के बाद आपको नोटिस आया, आपका फाइल नहीं है, तो क्या करेंगे आप? बैंक स्टेटमेंट मंगाओगे? बहुत मुश्किल काम है वो. You will waste a lot of time. So therefore make your file self-contained. जो जजमेंट आपने कोर्ट की कॉपी दी हैं, उस ऑर्डर शीट में लिखवानी है कि these judgments were handed over, duly highlighted. And you can make the officer write, he will have to write. I make them write. We have learned the hard way कि इनसे लिखवाना पड़ता है. So tomorrow if he doesn't write in the judgment and the member of power tribunal says, आपने कौन सी जजमेंट है, ऑर्डर में कोई लिखा ही नहीं सर, then we put a certified copy, sir, these judgments were quoted and argued by me, duly highlighted, and the same copies I am giving you. Now the member cannot say, फिर पता क्या बोलेगा वो, फिर आप you should have gone for rectification because you should have gone his murder, उसको सुप्रीम कोर्ट में जाते. So then so many things, but you have a proof that you did something before the authorities which you are doing before the next authority. Your communication skills, there is no duty to speak in English, and there is no pride kind, no, I can speak better English than somebody else. Language is not a canon or a basis for your relief. If you're comfortable in Hindi, speak in Hindi. जो कोई शर्म की बात नहीं है. मोदी साहब को इंग्लिश नहीं आती, मोदी नहीं बोलते ना, वो पढ़ के भी नहीं बोल सकते, तो हिंदी बोलते हैं. ही इज अ गुड कम्युनिकेटर, वेरी गुड राइटर. सो इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको इंग्लिश नहीं आती, यू कैन नॉट डू अपील. दिस इज सो यू कैन इवन ड्राफ्ट अपील इन हिंदी. वेयर इज द बार? इज फॉर देम टू गेट कन्वर्टेड टू इंग्लिश. अगर एक्ट में कहीं लिखा है इंग्लिश में लिखना है तो यू कैन चैलेंज दैट प्रोविजन. मैं आया तो हिंदी में लिखूंगा. यूपी में हिंदी में होता है नहीं. आप हिंदी के जो 20 पेज के ऑर्डर हम अपीलें बनाते हैं, अब उसको समझने में कितना टाइम लगता है, यू डोंट नो. बट हमें को बोला अब हिंदी में अपील बनाओ, बनानी पड़ेगी. चाहे पे जो आप हायर समबडी टू डू इट, एंड आई हैव डन इट इन 2-3 केसेस. हिंदी में अपीलें दाखिल की. सो कम्युनिकेशन स्किल्स इज यू हैव टू बी ब्रीफ, यूज, लर्न मोर इडियम्स. फॉर एग्जाम्पल यू से कि सर ये देखो इतनी एविडेंस थी, इन्होंने ये नहीं लिखा, इन्होंने ये नहीं देखा. Here the cat comes out of the bag. This was the crunching point in evidence which it didn't take. Instead of saying वो गलत था, फलत था, ये था, वो था, no, it's no document. For example, we write, this is patently illegal, without authority of law, mala fide. This one way of writing a communication. Second way is, the appellant humbly submits, the action doesn't seem to be bona fide. You are still conveying the same thing. फिर एक को गाली देना किसी को, दूसरा आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल में लैंग्वेज अच्छी लिखनी है. आपको, यू आर नॉट देयर टू डू अ कैट फाइट, यू आर देयर टू सीक रिलीफ. ऐसे वालों को रिलीफ नहीं मिलता. मंदिर में भी झुकते हो ना, ये मंदिर ही है, हमारे जैसे भी हैं. आप भगवान का रावण है, राम है, कौन बैठा है हमें पता नहीं, पर झुकना आपको है. तो कीप योर लैंग्वेज टेम्परामेंट इन चेक. आई गेट वेरी एंग्री, बट आई रियलाइज कि मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए. But sometimes you are, and at our level we can speak. We have done that kind of work. We can be aggressive, but not गाली गलौज. आपका रिटर्न में कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए जहां आपने को बहुत गंदी लैंग्वेज लिखी. आई गिव यू अ पर्सनल एग्जांपल. मिस्टर जे मलिक हमारे मेंबर थे. मैंने एक रिव्यू फाइल किया, बहुत गलत जजमेंट उन्होंने पास की. उन्होंने एक ऑर्डर पास किया इन द केस ऑफ प्लास्टिक पैकेजिंग इज रिपोर्टिंग मैटर. बहुत साल पहले की बात है, जो यहाँ ऊपर गैरी फ्लॉबरेट ट्रिब्यूनल होता था. उन्होंने बोला the argument of the council run 1,000 miles away from the grounds in review.
और हमारे बाहर की पॉलिटिक्स है, बलराम संघल साहब प्रधान थे, उन्होंने वो अगले डीएससी में छुपा दिया कि साला वर्मा बहुत बोलता है, इसका ऑर्डर छुपा दो। और जब मेरे को ऑर्डर डीएससी से पता चला, मेरे पास ऑर्डर पहुंचा ही नहीं था, क्लाइंट ने दिया ही नहीं था। मैं कहा ये क्या है? मैं कहा इसका मतलब से लोग बोलेंगे साले को ड्राफ्टिंग करनी नहीं आती, वकील बने फिरते। मैंने रिव्यू डाला 25 पेज का मलिक साहब के सामने, उनके एक एक उन्हें ग्राउंड को रिबट किया कि आपने गलत लिखा है। मैंने लिखा है कि दी reputation, self-esteem of a lawyer are the two biggest assets a lawyer has. You have hurt this by this order, and you should unconditionally withdraw this review order. ये मैंने अपने पेपर में लिखा था। I'm talking हो 15-16 साल कब से मलिक साहब सर? 94 के आसपास। अब उतने साल पहले की बात है। Then I was not that experienced also. तो मलिक साहब जानते थे, बहुत काम करते थे, तुम उनके आगे ट्रिब्यूनल में भी, यहाँ भी। तब 43 केस होता है ना, स्टे वाले, तुम सारे ऊपर लेके जाते थे ऑर्डर में। तो उनका वशिष्ठ रीडर था। मैं कहा वशिष्ठ को बाद में लगा लेना, कहना वर्मा जी गाला लिखी है, गाला लिखी है तो ओपनली सुन लांगे, तो की फर्क पैंदा है, साडा हक है गाला लिखना। And I was scared. Like, I don't know what he's going to talk now. तुम्हारे जगदीश गोयल थे, unfortunately he's dead. He was a good friend. A second review was not maintainable before the tribunal. It was a second review. पहला रिव्यू तो मेरा डिसमिस हो गया था। वो जज थे, वो इस तरह के जज नहीं थे जो हमारे नीचे बैठे। वो कहते गोयल साहब किसको वकालत सिखा रहे हो? एक तो वर्मा जी को हमने गालियां लिखी, आपने उनको ऑर्डर छुपा दिए, और ये इनका ऑर्डर ही नहीं है। कहते हैं कट पेस्ट किसी और का लिखना था, आपके ऑर्डर में चला गया। कहते हैं एक तो उनको गालियां लिखी, मैं कही फाइल भी गई, बंदा फाइल भी ले गया, पैसे भी नहीं दिए, और हमारे बार वालों ने इतने सारे मैगजीन में छपा दिया इसको। He said, Mr. Goyal, so much to review. Now speak. कहते हैं गलत सिखा रहे हैं मेरे को आप। He apologized in the open court. Yes, I passed a wrong order. So जो हम lawyers की, why I'm giving example not for my own glorification, but for you guys who are went to win litigation. आपकी self esteem बहुत जरूरी है, आपकी reputation बहुत जरूरी है। If you file an appeal which is a total forgery, don't file such appeals, because you'll get no result. You are only making money. And you will be branded कि आप इस तरह का वकील हो। ये नीचे वाली अथॉरिटीज का ध्यान रखती हैं। अब हाईकोर्ट लेके जाओ, हाईकोर्ट पीपल डोंट बॉदर, पर लोअर लेवल चीजें के मैटर करती है। आपका सेल्फ एस्टीम और आपकी रेपुटेशन, इट शुड नॉट बी क्लटेड। लाइक नोबडी कैन एवर टेल मी इन द डिपार्टमेंट मैंने कभी किसी को पैसे दिए। मैं वकालत छोड़ दूंगा अगर वो बोलते हैं मैंने किसी को पैसे दिए, मैं नहीं देता, मत करो। वी आर नॉट वेड टू वन क्लाइंट, वी आर स्किल्स हैं, आपकी नॉलेज है, कैसे जजमेंट आप पढ़ते, वही पारा पढ़ो जो आपको चाहिए, सारी जजमेंट पढ़ने की जरूरत नहीं होती। बट देयर आर फ्यू जजेस हु नीड टू बी एजुकेटेड, तो आपको सारी पढ़नी भी हो सकती है सारी जजमेंट। लेकिन उसका भी ध्यान रखना चाहिए कि आपका जो काउंटर पार्ट होगा वो कभी इन द लाइंस पढ़ता, जो लाइन उसको जरूरत दैट्स ओके, दैट्स टू लर्न फ्रॉम। नेक्स्ट क्वालिटी इज आपको आपके क्लाइंट के केस में विश्वास होना चाहिए। If you lack confidence in your client's case, you can never win it. Am I right, sir? Can you win? If you don't think client has a case, so at the threshold, you are shivering with fear कि नहीं ये होगा नहीं। For example, मेरे पास कोई आए PMLA के केस है, मुझे PMLA लॉ ही नहीं आता। I won't know whether I can win or not. मुझे नहीं पता। मेरा सुबह एक मैटर था CRC में, तो नया इशू था, तो I told the court, I have not studied this issue. I will take a date. जैसी जहाँ जो चेयरमैन है, मिस्टर वर्मा, मैं पहले भी केस किया, मैं कहता रिसीव मैंने किया नहीं, मेरे को पता नहीं इस इशू के बारे में। ओपनली टोल्ड हिम, दे कॉमन टाइम 2 months. So you must believe in your client's case. वो belief तभी आएगा if you are aware of the provision, you are aware of the law. Lawyers sell hope. We don't sell goods. We don't even sell services. We sell hope. You will take care of your case. You can take care of the case only when you are confident that your client has a winnable matter, right? You should have a thinking mind. आप जब केस कर रहे हैं, again, I shouldn't be telling on Mr. Bhatia's face. We learn from this from him. कि you should have a thinking on your feet. जब आप कोर्ट में खड़े होकर केस कर रहे हो, and you have to amend an argument. You have to take a fresh ground. Depending on what judge is asking, you should be able to think.
अब क्या है, अगर आपने एक केस को वो 4 ही पॉइंट आपने याद किए हैं तो आपको पांचवा पता नहीं. That's why you should know the entire gamut of law, what issues you are discussing. If you get caught, seek for adjournment. Don't die on that day, die another day. If possible, yes, sir, I'm not prepared. Openly admit on this issue, I'm not prepared. There's nothing wrong. Judge knows you are not prepared. You are fumbling. So why show your fumble and show your weakness to the other party? Yes, sir, on this case, you should know I'm not prepared next time. So you should have a thought process going on when you are on your feet. That is arguing a matter. चाहे आप यहाँ जैसे मैं बैठा था, कक्कड़ साहब के सामने कर रहा था, कहीं और कर रहे हैं, आपका माइंड थिंकिंग हो. वो कोई सवाल पूछा, आपके पास जवाब नहीं है, सर अगली बार बताएंगे, लेट मी एग्जामिन इट, मुझे इसका पता नहीं है. कोई शर्म नहीं जज के सामने कह रहे हैं आई डोंट नो द फैक्ट्स, मुझे पता ही नहीं. आप कोई पूछे भी असेसमेंट में क्या हुआ था, अब क्या झूठ बोलोगे? अब बोलोगे मैंने असेसमेंट कराई नहीं, मुझे क्या पता क्या हुआ जी, मैं तो असेसमेंट कराई नहीं. आई हैव टू सीक असेसमेंट ऑर्डर. So therefore, have a thinking mind when you're arguing the matter. Speed. अब ये एक नेचुरल इंस्टिंक्ट होती है, हम तेज बोलते हैं या धीरे बोलते हैं. What is the idea of a lawyer communicating with a judge? To teach a judge what your case is. Judge, assume judge doesn't know anything. जब शुरू में आप उसको ब्रीफ फैक्ट्स बताते हैं, क्या इश्यू है उसमें, that conveys how much law you know. For example, this cancellation case, you would simply say, sir, my RC has been cancelled on this ground, which in my view is not tenable in law in view of section 29 so and so. तो जज को पता चल गया कि आपका इस ग्राउंड पे कैंसिलेशन हुआ है. अभी नोज किसको मेरे को क्या करना है, उसने 100 केस किए, आप एक कर रहे हैं. तो ही हैज ए 100 केस मोर एक्सपीरियंस एंड यू आर डूइंग फर्स्ट केस. तो उसको जा रहा है, उसको लेटरिंग करने की जरूरत नहीं, आपको ब्रीफ बताना है उसको. बट ओनली व्हेन ही फर्दर क्वेश्चंस यू, देन यू हैव टू कम अप थिंकिंग माइंड, कौन सी जजमेंट दिखानी है, कि आपको पेपर दिखाने है, क्या नहीं. वी आर देयर टू टीच द जज यूर केस, नॉट द लॉ. लॉ उतना बताना है जितना आपके केस में इफेक्ट करता है, जो आपने ग्राउंड्स लिए. अगर आपने कोई ग्राउंड नहीं लिया और ग्राउंड बनता है, पॉज द केस. सर, आई हैव टू मूव एन एप्लीकेशन फॉर मेकिंग एडिशनल ग्राउंड ऑफ अपील. I have not taken this out of my ignorance. No harm in admitting before a judge के आपने गलती की है, उसको पता आपने गलती की है. अब आप कहते हैं जी पेनल्टी वाज लेविड विदाउट यूज ऑफ नोटिस. कहते दिखाओ कहां लिया ग्राउंड, आपने लिया ही नहीं. तो he cannot give you relief which you have not asked for. No court can give you. He can give you relief what you have asked for, what your prayer or what your grounds of appeal. Then these few words, we should again know that there is a doctrine of precedence. कि कक्कड़ साहब का एक पहला ऑर्डर था, दैट्स ए प्रेसिडेंट. आपको उसके साथ बहस करने की जरूरत नहीं है, सर ऑलरेडी पास है, कवर्ड मैटर, जो हम बोलते हैं कवर्ड मैटर. बट दिस यू कैन ओनली से व्हेन यू स्टडी दोज जजमेंट व्हिच कम इन बार और कम इन मैगजीन्स और कम ऑन फेसबुक और इन आवर नोट्स. तो आप अगर आपके काम क्लाइंट वो काम करते हैं, आपको उसको पढ़ना चाहिए. जैसे मैंने आज एक सुबह एक आपको ITAT की जजमेंट भेजी अपने ग्रुप में कि बोगस क्लेम्स क्या होते हैं. बहुत अच्छी जजमेंट है. उसने बोला भी 4 करोड़ रुपए कहां से लिया आपने? कहते जी वो भट्ट साहब से लिए थे, बड़े थे वो. कहते लाओ बुलाओ. कहते जी वो तो दिल्ली में नहीं, वो एफिडेविट ले आओ, उनकी रिटर्न ले आओ. जब वो कुछ नहीं एक्सप्लेन कर रहा, देन दे सेड दिस इज ए बोगस इन्वेस्टमेंट, इट्स ए बेनामी ट्रांजैक्शन. Therefore, ensure that we do not suffer from this particular syndrome. And if there's a doctrine, there's a precedent set by an authority, first quote this. It's very difficult for a judge, except our tribunal, I can tell him on his face, to defy his own orders on the similar issues. But ensure कि जो आप ऑर्डर कोट कर रहे हैं वो उसी इश्यू पे था जो इश्यू आपका है. Even a smallest circumstantial flexibility will require a new judgment to be written. A judgment is binding, the ratio is binding. Ratio is of two types. One is a general legal principle. One is a particular special act. दोनों रेशियो में आपको फर्क पता होना चाहिए. जनरल है कि बिना नोटिस के आप टैक्स नहीं लगा सकते. आपके एक्ट में लिखा है या नहीं लिखा. Because Article 300 capital A, you have a right to hold property. This cannot be taken away till you are given a notice. Right? एक स्पेसिफिक है कि जी ये जो बल्ब है,
ये बल्ब HSN कोड के इसमें आते हैं। सो कोई LED बल्ब लिखा है तो दूसरे बल्ब हाइब्रिड बल्ब आपको उस कोड में नहीं आते। ये आपको पता नहीं चाहिए कि इस जजमेंट को आप कोट कर रहे हैं तो उसमें किस फैक्ट्स पे वो जजमेंट है। फॉर एग्जांपल डीम्ड सेल्स की जजमेंट्स है, वर्स कॉन्ट्रैक्ट, राइट टू यूज, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, नो जजमेंट lays down any ratio in these cases because they are interpreting a particular entry qua the facts in that particular matter. हम कहते हैं कौन एलिवेटर में वो लिखा है, फैक्ट्स पता है आपको? नहीं जी, ऑल जजमेंट आर डिफाइनिंग वर्स कॉन्ट्रैक्ट ओनली, नो, बट वो किस फैक्ट्स में थी जहां आपको कोर्ट तभी करना है जब आपका केस उससे मिलता है। रेशियो भी तभी लागू होगा जो उसमें लगता है, राइट? Then there is, how do you draft an appeal? I tell you, give me an appeal, I'll draft in 1 hour. In any GST issue. With guarantee. जिसमें कोई ग्राउंड मिस नहीं होगा. For example, you have section 83 appeal. आपका बैंक अटैच हो गया या कुछ और हो गया. You have a Radha Krishnan industry judgment. उसमें सारा लॉ लिखा है. सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है. अब इसके आगे आप क्या पढ़ोगे? But you read those 165 pages, your grounds will come from that judgment. Now, those grounds have been tested in courts, and courts have given relief. This is how I draft grounds. हम तो अपनी अंग्रेजी लिखते ही नहीं, सिवाय पहले 2 पेज के हम नहीं लिखते कुछ. पेनल्टी विदाउट नोटिस है, ये आपने लिख दिया ग्राउंड. आपको कोई जजमेंट ढूंढनी है कि हमारे जीएसटी जहां डीवैट में कौन सी जजमेंट है जो कहते हैं बिना नोटिस की पेनल्टी नहीं लिख सकती. उस जजमेंट को निकालो, उसमें सारा पेनल्टी का लॉ है ना. जो 4 लाइन आपको सबसे अच्छी लगती है ग्राउंड में, उसको कोट कर दो, एज ए ग्राउंड कोट कर दो फ्रॉम दिस जजमेंट. बट विल कम इफ यू अंडरस्टैंड कि ये जजमेंट को हमने पढ़ना कैसे है, क्या फैक्ट्स है. फॉर एग्जांपल बलसल डाई केमिकल में 50,000 की पेनल्टी उन्होंने जमा करा दी थी, पैसे जमा करा दिया था, स्टिल डिफेंडेड अपील. ट्रिब्यूनल कहता है क्या बकवास कर रहे हो, पैसे जमा कर बात खत्म होगी. नो, tax can be collected only as per due process of law. High Court allowed this and they refund 50,000 rupees. Like I quoted section 129(5), read with 29(9). आपने उनके कहने पैसे जमा कराया होगा तो ऑर्डर पास नहीं करेंगे, इट्स अपीलेबल ऑर्डर. यू कैन विन एन अपील. आप करें ना करें अलग बात है, उनको ऑर्डर पास करना है. So on these kind of grounds we draft appeals. So these documents are given to you. Please go through. Tomorrow we'll touch section 29, 30, 129, 130 through mock courts. एक सेक्शन 29, 30 कैंसिलेशन, रजिस्ट्रेशन, रेवोकेशन. ये पीपीटी राहुल को बोलेंगे दे देंगे, आप ये जजमेंट पढ़ लो, भेज दिया उन्होंने सारा. तो जजमेंट सारी पढ़ लो. इन्हीं जजमेंट ये सारी लीडिंग जजमेंट्स हैं 129, 30 और 129, 30 पर. और सेक्शन पढ़ के आना, दोनों में बड़ा फर्क है. 30 डील्स विद कैंसिलेशन और सस्पेंशन. नाउ पहले सस्पेंशन नहीं था ओरिजिनली, अब सस्पेंशन भी है. दोनों में राइट्स आपके अलग अलग किस्म से वेरी होते हैं. सिमिलर 29 सारा कैंसिलेशन, इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं. अब इनके बाद आपको इनको सेक्शन 16 से कोरिलेट करना है. ओनली ए रजिस्टर्ड टैक्स पेयर कैन इश्यू इनपुट टैक्स क्रेडिट. इफ योर सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन वाज कैंसिल्ड retrospectively, then on that day you are deemed to be not registered. तो 16(1) और 2 में आप फॉलो नहीं करेंगे, आपको आईटीसी मिलेगा ही नहीं. हाउ डू यू डू दिस चैलेंज दिस, वो एक अलग प्रोसेस है. Therefore, you have to go through all that. Section 29 का क्या पर्पस है, सेक्शन 30 का क्या पर्पस है, सेक्शन 129, सेक्शन 130 का क्या पर्पस है. उसके लिए tomorrow we'll hope mock courts. I request Mr. Bhatia to be judge tomorrow and along with Dr. Rahul Kakkad. ये जज बनेंगे, कल हम इनके आगे आर्ग्यू करेंगे. And 1 or 2 of you will also pick you up to argue the matter. Ila, you could be one. You doing it job, right? Thank you very much for today. God bless you. Love you.